Hello and welcome to English Pathshala. Today we are going to start with our prepositions. Okay, now just as we did our helping verbs जैसे is, was, am थे, तो वो helping verbs होते हैं which join the subject and the verb, right? He is coming, he is going, so he is going. Now we want to, अब हमने उसको जो है sentence को थोड़ा और आगे ले जाना है. He is going मार्केट जा रहा है, सो ही इज गोइंग. ठीक है, तो अब हम आगे कैसे इसे जोड़ेंगे? ही इज गोइंग कहाँ? टू द मार्केट. सो नाउ दिस इज योर preposition. तो अगर आपको preposition नाम याद रखने में दिक्कत होती हो तो नो प्रॉब्लम. preposition का क्या काम है? preposition जो है वही सीमेंट का काम करता है कि वो जो है कोई words होते हैं, कोई verb है, कोई noun है, pronoun है, उसको बाकी जो है nouns या verbs या adjective not adjectives उनके साथ जो है जोड़ता है, right? So he is going to the market. कहाँ जा रहा है? वो मार्केट जा रहा है, right? Okay, so similarly we have like there is a cow. ठीक है, आपने बोला कि cow है, कहाँ पे है? खेत में है. So there is a cow dash the field. ठीक है, तो हम कहाँ है? खेत में है, in the field. कि खेत के जो है अंदर जो है वो there is a cow in the field, right? And then अगर हमने कहना है keep the book on the table. So keep the book and on is your preposition. On के ऊपर, right? So let us begin with on straight away then. So on आ गया हमारे पास कि हमने कहा है कि on the table, तो मतलब ऊपर. ठीक है, और on की हमारे पास और जो है यूसेज है. एक तो हो गया कि जगह के बारे में हमें बताता है कि ऊपर, राइट? ओके, देन आई एम कमिंग टू दिल्ली ऑन फ्राइडे. तो अब ये आपने एक ध्यान रखना है कि जैसे वीक डेज हैं, राइट? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, व्हाटएवर, सो दैट विल ऑलवेज हैव अ preposition ऑन, राइट? अगर आपका मंथ है इन दिसंबर, or if there is any year 1947, 2001, right? So any year then also you will use in. अगर आपने टाइम बताना है, so I will meet you at 8 o'clock, right? अगर I will meet you in the morning, in the evening, so if it is any time of the day then again in. So in the morning, in the evening. ठीक है, so ये जो है ये these are kind of rules, तो ये आपने याद रखने ही हैं. That on days and on the months, in December, January, February, at 8 o'clock, at 5 o'clock, at the evening, नहीं, in the evening, general, in the evening. So here we are specific, at 8 o'clock or something like this, right? Okay, so now this was about your on, राइट, जनरली. तो वैसे जो है अब आप जब पढ़ेंगे तो आप इसकी जो है छोटी छोटी जगहों पे यूसेज इसकी देखते रहेंगे, पर जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं आज हम उन्हीं की जो है ज़्यादा बात करेंगे, राइट? ओके, नाउ वी हैव दिस थिंग कॉल्ड इन. ओके, तो इन मतलब अंदर, राइट? कीप द पेंसिल्स डैश द पेंसिल बॉक्स. सो कीप द पेंसिल्स इन द पेंसिल बॉक्स, राइट? करेक्ट है कि अंदर उसके जो है उसको रख दीजिए. अब हमने कहा कि ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल. ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल. तो अब हम यहाँ पे उसमें भी ये अंदर हम कहते हैं कि इसका मतलब है अंदर, और ये इनटू भी अंदर है. ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, राइट? तो हम यहाँ पे इनटू क्यों जो है लगाते हैं? नाउ इनटू इज कि जब आप जो है कोई एक्शन हो रहा हो, सो व्हेनेवर देयर इज सम एक्शन, व्हेनेवर देयर इज व्हेन देयर आर थिंग्स इन मोशन, जब कोई चीज़ चल, तो ही जम्प्ड, उसने जंप किया इनटू, जब अंदर जो है हम उसमें डालते हैं. ही poured the milk into the glass. ठीक है, he poured the milk into the glass. So now there is some action that is taking place. He walked into the room. He walked in the room. Will not जब हम बोलते हैं तो हम बोल देते हैं he walked in the room, but the correct English is he walked into the. So when there is any action, jumped, walked, he walked into the room. So then
Okay, so then you will use your into. Or there is some change that take place, right? So one is that there is some action that is going on, and another is when there is a change, like the book the book was translated into many languages. So there is some change that has taken place. They divided the pizza into 8 pieces. So जो मेन जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कोई चेंज हुआ है into something different, right? So then maybe we can use into, right? Okay, right. Now another confusion we have is about in and inside. So for example, we say please come inside. Please come inside. If you're saying inside, तो आपको please come inside the house बोलने की नहीं ज़रूरत है. You say please come inside. अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के साथ फॉलो करना है, then you can write in. For example, he plays guitar in the band, right? So he plays guitar in the band. Okay, so now वहाँ हम कह रहे हैं कि बैंड में वो बजाता है, बट वी कैन नॉट रिप्लेस इट विद ही प्लेज गिटार इनसाइड द बैंड. ठीक है, तो इंटरचेंजेबिलिटी मतलब हम इनसाइड को जो है इनकी जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा हम नहीं कर सकते, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, सो आई सेड ही प्लेज गिटार इन द बैंड, सो यू कैन नॉट रिप्लेस दिस इन विद इनसाइड हियर, राइट? ओके, नाउ एक और हमारे पास वो आती है दिक्कत इन और विद इन की. ठीक है, तो इन और विद इन में क्या फ़र्क है? नाउ इन, आई विल बी देयर इन 5 minutes, राइट? इन एंड विद इन. आई विल बी देयर इन 5 minutes मीन्स कि क्लोज टू 5 minutes. Okay, so which means close to 5 minutes. And if I am saying that I will be there within 5 minutes will mean कि before 5 minutes, before the time ends. So before the decided time or whatever. Beside, which would mean that less than before, yeah, less than 5 minutes. I'll take less than 5 minutes, within 5 minutes. Or you say that I will return, he will return in a week. Okay, in a week. So if he is going today on Tuesday, so it means by Monday, Tuesday he would return. Within a week would mean it could be Saturday, before. अगर Tuesday को गया तो Saturday भी आ सकता, not necessarily कि Tuesday को ही वापस आएगा. Within a week, so it can be before. It is less than a week. So this is in means close to 5 minutes, so close to the designated time, and within means before the mentioned time or the time that is there, right? Okay, now next is your from and to. तो यहाँ पे जब भी हम कहीं आपने मूवमेंट हो रही है तो आप जो है फ्रॉम और टू में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई एम गोइंग फ्रॉम चंडीगढ़, जाना आपने टू है. सो फ्रॉम एंड टू, जब आपने कहीं जाना है, फ्रॉम मतलब कहीं से. ठीक है, सो आई एम गोइंग फ्रॉम चंडीगढ़, कहीं से, एंड कहाँ के लिए, यहाँ कहीं से आप जा रहे हैं. फ्रॉम, आई एम गोइंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू लुधियाना. आई एम गोइंग टू लुधियाना, मैं लुधियाना को जा रहा हूँ, और फ्रॉम मैं आ रहा हूँ. ठीक है, सो मतलब फ्रॉम वुड मीन बेसिकली आना, एंड टू मीन्स आई एम गोइंग टू सम प्लेस, राइट? ओके, नाउ सो फ्रॉम, ओके, सो फ्रॉम को हम पहले लेते हैं. सो फ्रॉम में एक आ गया आपका मूवमेंट, दैट आई एम कमिंग फ्रॉम Patiala, Ludhiana, Jaipur, wherever. Okay, and the second is ki source, like I got this pen from my teacher. I got this pen from my teacher. So from कहाँ से मुझे मिला? So source. Okay, so then you will say that I got this from my teacher. Or you want to say something, किसी चीज़ का आपने reason देना है. Reason देना है that my mother is suffering from asthma. ठीक है, माई मदर इज सफरिंग. सो what suffering, किस चीज़ से बीमार हैं वो? एस्थमा, सफ़र कर रहे हैं. शी इज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा. ओके, सो नाउ वी हैव, सो फ्रॉम एंड टू वी सेड. सो टू, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड.
right? So that is about to, or give this pen to her. Okay, now we come to for. Now for में क्या है? For में भी again वही है that for is like generally you know, I got this pen, I got this dress for you. ठीक है, आपके लिए. ठीक है, किसके लिए ये लाए हो? So it will tell you a reason. Reason again कि Kashmir is famous for its carpets. अपने carpets के लिए. ठीक है. And then we have purpose की purpose मतलब I got this dress for you, or period of time. Like I am going out for 5 days. ठीक है, तो अगर हम time का कोई reference दे रहे हैं for के साथ, so it means that I am going for 5 weeks के लिए again, right? Okay, so next we come to is at. Now at की जो है, at की भी हमें काफ़ी बार confusion रहती है, and especially if you're talking about you know, I will meet you at the railway station. So at the railway station means when you're generally saying that railway station का जो complex है, compound है, वहाँ पे मैं आपको मिलूँगा. I will meet you at the hotel. So when you're not you know, at the hotel means hotel के compound में कहीं पर भी मिलूँगा. So that is why, so when you're not very specific. So at the railway station, I will meet you. In the hotel means when you will meet somebody in a hotel room. Probably if somebody is staying there and you're going to meet him, right? And at the hotel, maybe generally in the somewhere in the compound. Okay, so and then another thing is that when you have आपने बताना है that I live at the Palace Colony in Jaipur. So दो जगहों का अगर आपने एक सेंटेंस में मेंशन करना है, तो जो छोटी जगह है उसके लिए आप at यूज़ करेंगे, और जो बड़ी जगह है उसके लिए in use करेंगे. So this is very important. I live for example, I will meet you at Tilak Nagar near the bus stand. ठीक है, so Tilak Nagar is a smaller place. So Tilak Nagar in Delhi or wherever. So I will meet you at Tilak Nagar near the bus stand, something like this. Okay. Then we have I live in Jaipur. When you're straight away saying I live in Jaipur, so then I live at Jaipur कहने की ज़रूरत नहीं. When you're talking about some colonies, some smaller part of the town, ठीक है, या town and then a bigger city, right? My aunt lives at Bilaspur in Himachal Pradesh. So at Bilaspur is a smaller place and Himachal Pradesh is the state. So naturally you have smaller and small place at and with a bigger place in, right? Okay. Now next is we have by. Okay, now by के साथ क्या है that by and with के साथ हमें काफ़ी बार confusion होता है. Now by is like when you're talking about the doer, right? Doer मतलब कि जो कर रहा है उसके साथ जो है for example this painting was made by my friend. ठीक है, तो with my friend नहीं होएगा. This painting was made by my friend. So if you have the letter was written by, this letter was written by Rohan with a blue pen. ठीक है, so doer is Rohan, so by Rohan and with a blue pen. So he cut the cake, or you say that he cut the cake with a knife. ठीक है, के साथ with a knife. He cut the cake with a knife. Or if you have these two things, that the cake was cut by Shruti with a knife. So the cake was cut by Shruti, doer. So by Shruti, और किसके साथ? With a knife, right? Okay. So next we have is okay, again we have by and during. ठीक है, इसमें भी आपको confusion हो जाती है. For example, if you have I will come back by Friday, right? I will come back by कि मैं Friday तक. So here by means I will come by Friday कि मैं तक आ जाऊँगा. Okay, right? Or I will come till Friday. You know, he was working till 6 o'clock in the evening.
तो वो 6 बजे तक कर रहा था. Now during, when you're using during, now during is over a period of time, मतलब gap of time. So you can say that my parents were away during the winters. So you know, there is a gap of time, not at the instant, not at that you know, specific instant, मतलब 6 बजे, during मतलब over a period of time. So my parents were away to Canada during the winters, right? So then during, so gap of time, ठीक है. तब हम so please finish your food during the recess. So during the recess, if your recess is for 30 minutes, 20 minutes or 15, so during मतलब वो recess का जो entire period है, उस दौरान आप जो अपना खाना खत्म कर लीजिए, right? So now these were kind of prepositions of you know, time, right? Now next time we are going to do the prepositions of place, like behind, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे. So what is to be used then, right? So with this we will do in the second part. So kindly please subscribe to the channel and don't forget to like, share and comment. And that's what we have for today. Thank you for watching.